Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Wait, one more student. Let the student will join. One more is there. Actually, this is the second unit we are discussing. Cauchy's mean value theorem. This is M1. Okay. So, what is the Okay, statement? sir. Sometimes for 2 marks, they may ask you to write the statement of Cauchy's mean value theorem. Second unit, calculus of one variable. So, what is the statement you see? Let if f maps from a comma b to r, f maps from a comma b to r, comma g maps from a comma b to r. Okay, r such that actually we are discussing about two functions. There are two functions here. F is a function, g is a function. Now here we have some conditions. Number one, f comma g are continuous. F comma g are continuous on closed interval a comma b. This is closed. The second condition is f comma g are differentiable. Differentiable on open interval a comma b. And we have a third condition also here. F of a is equals, no, sorry, g dash of x. G dash of x is not equal to 0 for all. This is the symbol for all x belongs to a comma b. If you take any value between a and b, the value of g dash should not be 0. Then there exists a point. Kulsum, are you there in the class? Yes, sir. C belongs to a comma b such that Hafsa, she did not join, I think. F dash of c by g dash of c is equals to, this is f of b minus f of a by g of b minus g of a. G of b minus g of a. This is the statement. They may ask you in exam only to write the statement. So this is the statement. After that, some problems we have to discuss. Or the question will come and how to do it. We will take some questions based on the Cauchy's mean value theorem. Previous year papers. Let me check the papers and how the question will come in exam. We have to discuss accordingly. Yes, one question I got it. So let us start our work. So question number one is find find C of, या फिर ऐसा using Cauchy's mean value theorem. Find C using Cauchy's mean value theorem for, we have two functions here. F of x is equal to log x, comma g of x is equal to 1 by x. And here the interval is in 1 comma e. The specific interval will be given. Now we can start our solution.
The solution must be what f of x and g of x will be given. Let me know. Please tell me what is f of x. It is equal to log x, Log x. comma. What is g of x? 1 upon x. Yes, 1 upon x. So we have to check the condition of continuity. Logarithmic functions are continuous function. 1 by x is also a function, continuous function. So no need to check the first condition in most of the cases. We can go for the second condition, derivative exists. Derivative of log x, direct answer is 1 by x, comma, g dash of x. We have to remember these formulas. Direct formula is there. Log x 1 by x. 1 by x derivative is minus 1 by x square. Direct to formula. We need not to substitute anything. Direct to formula. Yes, So sir. we write these two conditions together. Therefore, f comma g are, what do you say? F comma g are continuous. Continuous because logarithmic function continuous. 1 by x is also continuous. And we have just now obtained the derivative also. So differentiable, continuous and differentiable on closed interval 1 comma e and open interval 1 comma e respectively. Open interval 1 comma e respectively. Respectively. After that, we have to check the condition number 3 also, g dash of x value. If you notice that g dash of x value is, we got it as minus 1 by x square, which is not at all 0. If you take any point between 1 and e, okay, it is not. Example के लिए 1 यहाँ पर है, e value is 2.71. To take any value between this, for example, I will take 1.2. If you put 1.2 here, we don't get any zero answer, right? Yes, sir. Okay, so there is no need of doing this. It's only for your understanding. Third condition also satisfied. So what do you write? By Cauchy's mean value theorem, there exists. You can write our symbolic form or in words, your choice. There exists a point C belongs to the interval 1 comma e. है ना, यही बोल रहे ना स्टेटमेंट में अपन, such that f dash of c by g dash of c, f dash of c by g dash of c is equal to f of b minus f of a, f of b minus f of a by, come on, give me the answer, g of b minus g of a, g of b minus Yes, sir. g of a. Now let us substitute the values and we get a point between this interval. We can verify that also. F dash of c की value, what is f dash of c? एक काम करेंगे, वो 1 स्टेप यहाँ upon पर फिर c. से लिख देंगे. f dash of c by g dash of c is equals to f of b Of b minus f of f of minus b a. f of minus f of a by, divided by g of b minus g of a. yes, good. Look at that. F dash of c we get from here. यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, है ना? क्या होता? 1 by c होता? Yes, sir. Yes, sir. It is 1 by c divided by g dash of c. G dash of c means minus 1 by, what do you say? Minus 1 by c square is equals to Yes, sir. f of b. What is f of x? F of x is log x, Log means x. f of b is log b. Log b minus log a by g of b minus g of a we can get from this. Okay, g of x is 1 by Yes, sir. x. So g of b means 1 by b minus 1 by a. 1 by b minus 1 by a. But already we know that our a value is this one,
This is our A value. This is our B value. A value is 1, B value is A value is 1 here in our question. If you compare with the standard form, B value is E. We put here. Minus we takes to the numerator 1 by C as it is. Second fraction will become reverse, that is C square by 1. What is our B value? B value is E. So we get log E. A value is 1 means log 1 divided by B value is means 1 by E minus A value is 1. 1 by 1, 1 is 1 only. So then 1 square term cancelling with this C, we get minus C is equals to log E. Log E value is 1. You can take the calculator also. Log E value is 1 minus log 1 is 0 divided by, you take the LCM, denominator E is the LCM, you get 1 minus E. E. This E also will goes to the numerator. Minus C is equal to E by, this E will goes to the numerator, and this minus sign we can keep it like that, 1 minus E, which implies that minus C is equal to this numerator E as it is. डिनोमिनेटर में अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया अपन तो माइनस कॉमन ले सकते हैं. We can write it as E minus 1. This minus cancel. We got our value is E by E minus 1, which is definitely belongs to the interval 1 comma E. वेरीफाई करके देखना है तो देख लीजिए आप. E value is 2.71 by 2.71 minus 1. तो कितना होता 2.71 by 1.71. ये जो भी आंसर आएगा ये इंटरवल के बीच में आता. That's it. That's it. That's it. Yes, sir. Then we say that Cauchy's mean value theorem verified. Hence, we have to find out C only. So C value is E by E minus 1. This is all about Cauchy's mean value theorem. क्या करना है आपको पहले कंडीशन में? You have to check the continuity. And most of the cases, the function is continuous only. Then we have to do the derivative. And we don't get the case such there derivative does not exist. ऐसा case possible नहीं है. इसमें Cauchy's mean value theorem वाले केस में. Then we have to check the g dash of x. I never seen the question where all the three conditions are not satisfied. और रोल्स में और लेग्रांजेस में होता, कॉचीज में वो होने के चांसेस बहुत कम रहते. एक और क्वेश्चन देखिए, आपको बताएंगे कैसा फंक्शन वेरीफाई होता है. देखिए एक क्वेश्चन और ले लो. सेकंड क्वेश्चन, वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f of x is equals to e power x. अगर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया तो वेरीफाई नहीं हुआ तो परेशानी. क्वेश्चन देख लेंगे बुक में से. Yes, sir. एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, मिल जाते. Okay, sir. We are doing the problem based on Cauchy's mean value theorem. एक मिनट, 1 second.
Okay, we can do it one question. F of x is equals to, we take as e power x, and g of x is equals to e power minus x. And here the interval is a comma b. A comma b is the general interval. Okay. Now, before moving to this question, as I said so many times, but I want to tell you. Can you hear me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. This Yes, average sir. value a plus b by 2 always belongs to the interval, any interval a comma b. Average arithmetic mean we can say this is c is equal to, अगर आपकी वैल्यू ऐसी आ रही है a plus b by 2 या फिर root of ab, this is also belongs to the interval. This is called geometric mean. And one more is there, 2ab by a plus b. This is called harmonic mean. This also belongs to the interval. This is the basic point. बार बार फोन कर रहे हैं. जी जी ओके ओके ठीक है ओके. So these three values are belongs to the interval. अभी अपना problem continue करेंगे. Solution. F of x is equals to, we have e power x, comma g of x is equals to, we have e power minus x. Now continuous function बोलते exponential function तो continuous ही होता. Find out the derivative. F dash of x is equal to e power x only. And if you find out the derivative here, g dash of x is equals to minus e power minus x. Okay. Actually e power minus x का derivative e power minus x ही होता. Inner function is minus 1. So we write Yes, sir. therefore f comma g are continuous and differentiable. Continuous and differentiable on closed interval a comma b and open interval a comma b respectively. And moreover, you see g dash of x value we are getting, this is minus e power minus x, which is not at all 0. And you take any value between a comma b, we get some answer should not be 0. So therefore, by Cauchy's mean value theorem, there exists a point C belongs to a comma b such that, what's the formula? This formula will help you to understand the concept. F dash of c by g dash of c is equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a. G of b minus g of a. Now putting the values, f dash of c means we get e power c here, by g dash of c means minus we write to the numerator e power minus c is equals to f of b, it's a e power b here, minus e power a here, divided by g of b, so e power minus b minus e power minus a. And we have learned one formula in basic classes. If anything power negative, we should write 1 by form. Okay ना? ये formula Yes, अपन sir. basic classes में देखे थे. Anything power negative means we should write in a negative 1 by form. So wherever negative is there, we write 1 by form. That is the next page. This implies that minus e power c by e power minus c, I am writing as 1 by e power c is equals to
Here numerator we don't have changes, e power b minus e power a, but denominator again I want to write 1 by e power b form minus 1 by e power a form. Okay, this implies minus as it is, e power c also as it is. This value will go to the numerator, becomes e power c again. उल्टा हो जाता. This is equal to e power b minus e power a by, if you take the LCM as a denominator, e power b into e power a will be the LCM. So e power b say e power a is left here minus e power b is left here, and this fraction form will go to the numerator. This implies minus e power c becomes e power 2c is equals to, ये वैल्यू न्यूमरेटर में चल जाएगा. Bases are equal, power should be added, a plus b into e power b minus e power a. Denominator, we take minus common here, the order will change, e power b minus e power a. What happened here is minus and minus cancel, this complete value cancel, we get e power 2c is equals to e power a plus b. Okay, this implies e and e cancel, 2c value is a plus b, and then we get c value is a plus b by 2, which is सर also 2c कहाँ belongs. से आया? Bases are equal, power should be added, Naji. Oh, okay. Hence, Cauchy's mean value theorem verified. Cauchy's mean value theorem verified. ओके, ये कॉचीज का कॉन्सेप्ट है, इसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. अब इसके साथ साथ एक और टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है टेलर्स थ्योरम. ये 2 मार्क्स के लिए, टेलर्स थ्योरम ओनली फॉर 2 मार्क्स. Yes, sir. टेलर्स थ्योरम का फार्मूला कैसा बनता, वही लोग कंफ्यूज रहते बहुत सारे. अभी देखिए फार्मूला कैसा बन रहा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस x power 1 by 1 factorial into f dash of a plus x square by 2 factorial f double dash of a plus x cube by 3 factorial into f triple dash of a plus and so on. Plus and so on. This is Taylor's theorem. टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरेंस थ्योरम में एक छोटा सा डिफरेंस है. मैं एक स्लैश डाल के यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ. मैक्लॉरेंस मैक्लॉरेंस थ्योरम मैक्लॉरेंस थ्योरम और टेलर्स थ्योरम में क्या डिफरेंस है, अदरवाइज बाद में आप लोग ये नहीं बोलना ये वर्ड अपन डिस्कस ही नहीं करें. टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम इज, if the point is given to expand, we use Taylor's theorem. If the point is not given, we take 0, 0. 0 is a point. तो मतलब कुछ भी नहीं, a की प्लेस पे 0 रखेंगे. f of 0 प्लस x पावर 1 by 1 फैक्टोरियल तो x ही होता. f dash of 0 प्लस x square by 2 फैक्टोरियल इंटू f double dash of 0 प्लस x cube by 3 factorial into f triple dash of 0, f triple dash of 0 plus and so on. This is the 2 different formulas. But how to use it? आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना, सर कौन सा वाला यूज करेंगे, पहला यूज करेंगे क्या दूसरा यूज करेंगे. इसके लिए एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, आपको पता चल जाता है कि कौन सा वाला यूज करना है आप. ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन ऐसा आता, देखिए, फाइंड द टेलर्स, फाइंड द टेलर्स, TAY टेलर्स वी आर यूजिंग. TAI का मतलब वो कपड़े सीने वाला टेलर होता. TAY Yes, sir. टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन of some function value will be given here. F of x is equal to
f of x is equal to, we have x cube plus 3x square plus 2x plus 3. And here about का मतलब है वो पॉइंट जिसके नियर आप इसको एक्सपैंड करने वाले हैं. अबाउट x इज इक्वल टू 1. सीधा सीधा बोले तो a की वैल्यू 1 है. ठीक है, ये a की वैल्यू ये वाले 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है. अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ तक एक्सपैंड करेंगे? तो सीरीज में मिनिमम 3 टर्म्स दिखना आपको एक्सपेंशन. 3 स्टेजेस तक आप उसको एक्सपैंड करना. अब वो कैसा करेंगे स्टार्ट, आप देखो. एफ ऑफ एक्स तो आ गया क्वेश्चन में, अभी स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन. जरा अच्छे से देखिए प्लीज. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हो सकता है आपके कॉलेजेस में इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करें. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स वैल्यू. ये वाली तो आ गई. एफ ऑफ ए, दिस इंप्लाइज व्हाट टू डू हियर. जहां पर भी x है वहां पर रखेंगे 1. x वैल्यू इज 1 है ना, तो इट्स 1 पावर 3, Yes. 1 ओनली. 3 into 1 square is 3 only. 2 into 1 is 2 only. Plus 3. I can say that the aggregate answer of 3 plus 3, 6, 8, 9 होता. ये इसका वैल्यू आ गया 9. अब करेंगे एफ डैश ऑफ Yes, एक्स, sir. डेरिवेटिव करेंगे. एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बोल तो 3 2 जा 6x, प्लस x का डेरिवेटिव 1 मतलब 2 लेफ्ट. दिस इंप्लाइज एफ डैश ऑफ 1 वी हैव टू पुट, हर जगह 1 ही रखेंगे ना. 3 प्लस 6 प्लस 2, 9 प्लस 2 इज 11. अब रखेंगे अब डबल डैश के ऊपर. डबल डैश मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स 2x, 3 2 कहीं नहीं जाएंगे आप. क्या बरो 6x प्लस 6. दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश ऑफ 1. क्या वैल्यू आती है अपने को? 6 प्लस 6 आती ना, दैट इज 12. एफ ट्रिपल डैश भी कर लेंगे, इज इक्वल टू 6 ओनली ना. अगर मैं Yes. ट्रिपल डैश की वैल्यू अगर Yes, पॉइंट sir. भी रखा तो नथिंग विल हैपन, वी गेट 6 ओनली. अच्छा, इसका फोर्थ डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है क्या, बोलो आप लोग. होता Yes, नहीं होता? sir. फोर्थ डेरिवेटिव आंसर विल बी 0. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. Yes, sir. Oh, नहीं. Okay, now we conclude this one by writing by Taylor's Taylor series, by Taylor series और Taylor's theorem और Taylor's expansion, सबका मतलब एक ही है. फॉर्मूला लिखनी. f of x is equal to, come on tell me along with me, f of a plus F of x A power 1 plus by 1 X. factorial is x only. This is f dash of a plus x square by 2 factorial into f double dash of a plus x cube by 3 factorial, Plus F x X cube cube by by 3 factorial 3 into f factorial triple dash of a, triple dash of a, triple plus and so A. on. Okay, now before moving to that value we have to replace our, हम इसका चार्जर लेगा लैपटॉप का मस. f of a value is 1 plus x into f dash of, हम तो लैपटॉप बंद हो जा रहा, जल्दी जाओ. f dash of 1 plus x square by 2 factorial is 2 only. f double dash of 1 plus x cube by 3 factorial is 6 into f triple dash of a is 1 plus and so on. f of x की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भाई? x क्यूब प्लस Plus 3x थ्री square एक्स स्क्वायर plus प्लस 2x plus 3. एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 का आंसर कितना आया? f ऑफ 1 का आंसर आया 9. 9. 9 प्लस x इंटू f डैश ऑफ 1 का आंसर कितना है? 11. 11. राइट हियर 11 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ डबल डैश का आंसर कितना है? 12. 12. दिस इज 12 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 इंटू
ट्रिपल डैश का आंसर, ट्रिपल डैश 6. का आंसर बोलिए। 6, 6 प्लस एंड सो, राइट। ये 6 से ये Yes, 6 sir. कैंसिल, 6 वन जा, सॉरी 2 वन जा 2 6 जा, ओके, Yes, sir. दैट्स इट। अगर आप चाहे तो यहीं पे, चाहे तो क्या यहीं स्टॉप कर देना है आपको, नो पॉसिबल, नथिंग विल बी पॉसिबल। एक्स माइनस, सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक अपने छोटे से मिस्टेक करे हैं। क्या करें भाई, एक्स माइनस, ओ फार्मूले में भी ए आना था, फार्मूले में भी एक्चुअली यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। फार्मूले में भी, वहां पर भी, स्टार्टिंग में भी एक्स ऐसा आना हो, एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पर भी आना है वो ऐसा, एक्स माइनस ए आना है, उसको पूरा इरेज कर तो पूरा इरेज हो जाता हो। तो यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ मैं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल टू द पावर ऑफ 3 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, ये पूरा, सॉरी स्टार्टिंग में ही आना था, मैं नहीं लिखा गलती से। तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब क्या है एक्सपेंशन में, प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ ए इज 1 प्लस एक्स माइनस ए इज 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू एफ डबल डैश ऑफ 1 प्लस x minus a raised to the power of 3 by 3 factorial is 6, and this is triple dash of 1 plus and so on। f of a की वैल्यू कितनी आई भाई यहाँ पर, सॉरी, f of 1 की वैल्यू है 9 प्लस x माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू है 11 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 12 प्लस x माइनस 1 होल टू द पावर ऑफ 3 बाई 6 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाता, ये 2 जा कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो ये जो भी आपका आंसर आ Yes, रहा, sir. ये फाइनली आपको आंसर ये आ रहा 9 प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल क्यूब। आप इसको वेरीफाई करना है आपका आंसर सही है बोल के चेक करना है तो इसको ए माइनस बी होल क्यूब से एक्सपैंड कर लो, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर से वापस यही एक्सपेंशन मिलता है। दिस इज कॉल्ड टेलर थ्योरम, राइट। Yes, sir. ये टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन है। अगर 0,0 नेबरहुड पे करना है, छोटा सा क्वेश्चन और एक लेके इसको खत्म करेंगे क्लास को। एक्सपेंड e power x using Taylor's theorem, using Taylor's theorem, but the point is not given, वो पॉइंट नहीं दिया जिसके अराउंड अपन एक्सपेंड करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर वर्क। f of x is equal to e power x, this implies we put the point f of 0 because point is not given here, so we take default 0, e power 0 is 1, f dash of x, derivative of e power x is e power x only, this implies that f dash of 0 which is equal to e power 0, which is 1 again, f double dash of x is equals to e power x. This implies that f double dash of 0 is equal to e power 0, which is equal to, all the values are similar only, अलग नहीं आना चाहिए आप, बस है। अब ये आप लिखो फार्मूला बाय टेलर Yes, थ्योरम, sir. 2 मार्क्स का क्वेश्चन में ज्यादा डीप में नहीं जाना,
बाय टेलर थ्योरम, बाय टेलर थ्योरम। मैं दो क्वेश्चन लिया सैंपल के लिए, साइन एक्स कॉस एक्स को भी एग्जाम में पूछ सकता हूँ ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर भी अगर ए की प्लेस पे जीरो रख देते हैं आप तो ये पूरा फॉर्मूला इसके जैसे ही बन जाता। एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। अब आप बोलेंगे सर ट्रिपल डैश तो अपन करे ही नहीं, मगर सिमिलर वैल्यूज है ना जी, सब अपन करके भी देख ले तो होता ही चाहता। आप अगर नहीं भी करे तो परवाह नहीं है। यहाँ पर है ई पावर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बाई वन प्लस एक्स इंटू एफ एग्जाम में भी डैश ऑफ। पेपर चलता था। हाँ एग्जाम में भी आपको एक्सपेंशन में तीन टर्म लिखे तो बस है। एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू है वन, इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। आपको मालूम होना चाहिए ई पावर एक्स का एक्सपेंशन है ये, ई पावर एक्स का एक्सपेंशन है वन प्लस एक्स पावर वन बाई वन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल। ई पावर एक्स का एक्सपेंशन है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है खाली अबाउट। अब हो भी सकता है ये क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू कुछ पॉइंट अगर दिया तो ये फार्मूला अप्लीकेबल होता, अगर पॉइंट नहीं दिया तो जीरो लेते, पॉइंट दिया तो फिर ऐसा वाला फार्मूला यूज करते। टेलर्स थ्योरम फिर थर्ड यूनिट में आने वाला है, बट इसके जैसा सिंपल नहीं है, वो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। अंडरस्टैंड? सो विद दिस Yes, आई sir. वांट टू कंक्लूड अवर क्लास। ये पीडीएफ और आपको इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाती है इंशाल्लाह। विल एंड अप दिस मीटिंग। हाँ Yes, sir. ओके सर।